In the last lectures, we are discussing the Navier-Bayes theorem. First, we have gone through the theoretical part, and then have discussed one practical also. Continuing that, they also will try to discuss one more practical. Okay. So my screen is visible to you, right? My screen visible. Yes, sir. So I hope overall the concepts of the Navier-Bayes theorem clear to you, and the example I have discussed that is also clear. So let's see one more application of this theorem. Okay, that is already discussed the weather problem. Today we will go for implementing it. So first of all, you need to define the data set. Is the level. ठीक है, जो ये डेटा यूज कर रहे हैं, इसमें जो पहला दो वेदर और टेम्परेचर है, ये क्या होगा आपका फीचर्स होगा, और जो प्ले मीन्स प्ले में हमने क्या देखा था, we have seen that the play either you go for playing or not. Either the thing is right. The overall data set weather, we are going to weather and weather as already introduced in the first lecture. I hope you might recall them. So the terms are sunny, overcast, rainy. This actually given to you. So we have defined them and assigned to weather as they are already. Okay. Then temperature, hot, mild, cool. Okay. Then play, no, yes, that many times no, and that the sequence given. We are just following that. ठीक है, ये दिया हुआ था, हमने वैसे का वैसे ही ये तीन बना लिया है. So overcast, rainy, sunny as 0, 1, 2. अभी हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज हैं इसको एनकोड करेंगे, ठीक है. और इसको कैसे एनकोडिंग करेंगे, 0, 1, और कुछ नहीं है, ये इस ताम के बदले एक हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर असाइन कर रहे हैं. क्योंकि नंबर असाइन कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या, एनकोडिंग. ओके, overcast, rainy, sunny as 0, 1, 2, and this thing will be known as level encoding. अब ये लेवल एनकोडिंग के लिए अगेन वी आर गोइंग टू डिपेंड ऑन दैट sklearn. And the first lecture also, or I think second lecture on this Navier-Bayes theorem, I introduce what is scalar. So scikit-learn in this library, it already level encoder library for encoding levels with a value between and 1, less than the number of the discrete classes. ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू इंपोर्ट प्री प्रोसेसिंग फ्रॉम sklearn. ठीक है, फ्रॉम sklearn इंपोर्ट प्री प्रोसेसिंग. ये मैं क्या लिखा हूँ, व्हाट आई हैव रिटन हियर, प्री प्रोसेसिंग, बिकॉज दिस एनकोडिंग पार्ट इज नथिंग बट you are actually pre-processing the data, right? So you are just sending that values, the overcast, rainy, sunny to 0, 1, 2 like that. So that can be done with the help of this pre-processing that is being imported from sklearn. ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, ये ठीक है इंपोर्ट कर लिया, अब इससे हम लेवल एनकोडर, प्री प्रोसेसिंग से लेवल एनकोडर
फंक्शन यूज करें। Yes, is this clear or not? This response up to this portion. Hello. Hello, Yes, sir. sir. Do you, Can you can explain you once more? hear Because, me? yes, sir, but it's lagging. Hello. Hello, sir. I think yes, yeah, I can hear you. I think the network problem. See, from sklearn, I'm importing pre-processing. Why? Because I need to encode these values overcast, rainy, sunny into some numbers, say 0, 1, 2 like that. अब इसके लिए ये हम क्या कर रहे हैं एज ए होल, वी आर डूइंग द प्री प्रोसेसिंग। सो ये प्री प्रोसेसिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्री प्रोसेसिंग को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि कहाँ पे है आपका sklearn। ठीक है, अब इसमें से आपको क्या चाहिए, you are actually performing the encoding, for that again you need to import that level encoder। ठीक है, now level encoder you have imported। now next you need to create a level encoder for your tags। आपने तो इंपोर्ट कर लिया, अब इससे एक इंस्टेंस चाहिए हमें, राइट। सो वी आर क्रिएटिंग आवर ओन लेवल एनकोडर, and that can be done with the help of this line of this code statement, that is le is equal to preprocessing dot level encoder। now हमारे पास लेवल एनकोडर जो है ये बन गया है le। now what we will do, converting the string levels into numbers, जो हमें करना था। ठीक है, so weather encoded is equal to le dot fit transform weather। now please look at this statement very carefully। क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, देखो le क्या है, लेवल एनकोडर जो हमने अभी बनाया है। now इसमें हमें डाटा फिट करना पड़ेगा, राइट। अब क्या डाटा फिट करेंगे, we try to encode these values, overcast, raincoat, rainy, sunny, so these things we want to encode। so ये जो values हैं इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हमें ये डाटा कहाँ से मिलेगा, जो हमने बना के रखा है वेदर में। ठीक है, सो जस्ट वेदर एनकोडेड le डॉट फिट ट्रांसफॉर्म वेदर। सो इनपुट हम कर रहे हैं वेदर के जरिए। ठीक है, so this will be in means encoded, so they will be converted into some numbers। so agar you want to see those change or those converted numbers, then you can easily do it this statement print weather encoded। ठीक है, now you tell me whether this is clear or not। Yes, sir. okay, so Uh, similarly, you can do this encoding part for the temperature and play also। वहाँ पे ज़्यादा तो थे नहीं, क्योंकि आपको याद होगा हमने वेदर के लिए अभी एनकोडिंग कर लिया है, इन सब के रेस्पेक्ट पे आपको कुछ नंबर मिल जाएगा। अब हमारे पास टेम्परेचर है और प्ले है। सो वी आर डूइंग द सेम थिंग अगेन, because we already have that encoder, that is le। now just you need to feed the data here। so le.fit transform, you are feeding from temperature. Okay, then again le.fit transform play. Just keep it into different variables, that is temperature encoded, and that is level. So again, just verify them by printing them, so that print those values to temperature encoded, and print play level। so यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि whether they are successfully encoded or not। ठीक है, now combine both the features weather and temperature in a single variable, that is list of tuples। अब हम क्या करेंगे, ये जो वेदर है और टेम्परेचर है, इन दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करके एक सिंगल वेरिएबल में इसको जिप करेंगे, राइट। आई होप यू ऑल नो व्हाट इज जिप। सो उसके लिए आपको आप डायरेक्ट कर सकते थे
लिस्ट जिप नहीं लेके भी आप कर सकते हो, बट आई सजेस्ट दैट यूज जिप। ठीक है, लिस्ट जिप वेदर एनकोडेड टेम्परेचर एनकोडेड। अब ये दोनों कंबाइन होके फ्यूचर्स में आ जाए। यहाँ फ्यूचर इन दोनों को एक साथ कंसीडर कर रहे हैं। किसको हम एक साथ कंसीडर कर रहे हैं? वेदर एंड टेम्परेचर। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग these things again. So we want to combine these two features, weather and temperature, in a single variable, and that single variable is features. So list zip weather encoded, comma temperature encoded. Now you can just verify it by printing it, printing the values of the features. So print features. Okay. Now the main tasks that we are going to build our नेट बेस्ड क्लासिफायर। ठीक है, अभी हम हमारा जो नेट बेस्ड क्लासिफायर मॉडल है इसको जनरेट करेंगे, इसको बनाएंगे। ठीक है, इसको क्रिएट करेंगे। सो as you all know that which net-based theorem model means net-based classifier model we are dealing it is the Gaussian one। ठीक है, so इसके लिए हम 3 स्टेप फॉलो करेंगे। We are going to follow 3 steps for generating this model. First, we'll create this net-based classifier, then we'll fit the dataset on this classifier, and then we perform the prediction. So let's go for it. First, create a Gaussian classifier model is equal to Gaussian NV. Then train the model using the training sets. So model.fit features, comma level. Now you know that in the features we both have this. We have both this weather and temperature encoded data, and that level you have seen that we have already encoded it, the values of the play, yes or no, under level। ठीक है, लेवल में क्या वैल्यूज था? जो प्ले का देता था, प्ले में क्या था आपका लेवल? yes or no। So we have this encoded data under level, so just fit it। So model.fit features.level। Now that net-based theorem will be applied. You all know that that is posterior probability and prior probability, and that individual predictors and class probability. All these things will be used from these two values, and accordingly some predicted output will be displayed to you। Say we want to predict model.predict 0 to। अब यहाँ पे 0 और 2 आप जब यहाँ पे प्रिंट करोगे, बिफोर दिस मीन्स आफ्टर convert encoding them, just print this portion temperature encoded and note down those values। okay, 0 यहाँ पे क्या बता रहा है? that value 0 signifies here, and 1 and 2 like that। so we want to predict the coexistence of 0 and 2। so 0 यहाँ पे है overcast and 2 क्या है? mild, right? so overcast means what? that weather, if the weather is overcast and the temperature is mild, you play or not। ठीक है, play और का भी play का भी हमने क्या किया था? we have encoded this to some values, either 0 or 1 जो भी होगा। so only you will get some output। ठीक है, so predicted value, predicted here 1 indicates that players can play and 0 indicates players are not playing। ठीक है, so overall this way we can build our net-based classifier, and of course the Gaussian classifier। and overall process, first what we have done, we have imported pre-processing from Scala. Then from that pre-processing we have created our own level encoder, we have fit our data, right? So that data we have already stored in 3 variables: weather, temperature, and play। Then we have encoded their values for all the 3 of them: weather, temperature, and level। Then you have seen that going for creating the features, actually we have combined those both of them, that is weather and, because we want both of them together axis कि weather ऐसा रहेगा और टेम्परेचर ऐसा रहेगा, ये दोनों रहेगा साथ में, तो क्या प्ले होगा या नहीं।
Are you getting me? So weather is say sunny and the temperature is say mild. Whether play yes or no. So that's why we have combined them. Okay, and keeping it in future. Then Gaussian classifier is created as usual. I have explained this fact. You are the data model.fit features level, and then you are predicting it with the halos. Here I am putting 0 to, you can put 0 say 1 or like that, because accordingly you will have different values. So you will get some predicted output. Now I am going to show you the overall program. Please take a screenshot of it. ये जो मैंने दिखाया हूँ ये पूरा प्रोग्राम का एक स्क्रीनशॉट ले लो, और जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को पाइथन स्पाइडर में आप ये करके एक बार चेक करके देखोगे और डिफरेंट वैल्यूज पुट करके उसका आउटपुट प्रेडिक्टेड आउटपुट देखोगे, देन यू विल एनालाइज योर वैल्यूज. Yeah, this is the first one, first page. This is the second page. Overall, everything what I have discussed, what I have shown to you, they are depicted here. Okay. So yeah, I hope you have taken the screenshot, right? Screenshot आप लोगों ने ले लिया है. So let's go for implementation part. Wait for a minute, it will open. You may see from the console part that I have already implemented that, and accordingly I try to predict the output with respect to 0 and 2. So predicted value is 1. 1 means for play. So this is my program. I have saved it by the name NB2, that is net-based second example. So each and every line of this means program I have explained, but please implement it by yourself. Then only you will get to know how the program is working actually, how each line of the statement is working. ठीक है, हर एक लाइन कैसे काम कर रहे हैं आपको तभी समझ में आएगा आप खुद भी इसको इम्प्लीमेंट करके देखोगे. ठीक है, एक एक लाइन देखो. फ्रॉम sklearn इंपोर्ट प्री प्रोसेसिंग, यहाँ से इंपोर्ट किया गॉसियन एनबी, क्योंकि हमने क्या बनाया गॉसियन नेट बेस्ड क्लासिफायर. ठीक है, तो प्री प्रोसेसिंग ये क्या कर रहा हूँ मैं, एनकोडर बना रहा हूँ. एनकोडर का नाम क्या दिया था मैंने, एलई, और वेदर टेम्परेचर प्लेस जैसे हैं वैसे ही आपको देता दिया है, वैसे ही आप इसको लिख के बना लोगे, राइट. After that, you try to feed the values of weather when you already encoded it. Okay, you'll get those values, note them down, and similarly, you will encode the values of temperature and level also, and also try to verify their values with the help of printing command. And then you will create the features by combining both this weather and temperature condition and keeping those values in features, and you'll again print the values for right. And after that, you have created the Gaussian and the model, net-based model classifier model, and then you will feed the data by features, and level. Then in this case, I'm trying to predict the value of 0 and 2, their occurrence together. See, so you may put some different values, and accordingly, you will have those different predicted outputs and try to analyze them. इसको कैसे न्यूमेरिकली करना था, इसका मैथमेटिकल जो इक्वेशन है इसको कैसे सोल्व करना है मैंने अभी तक आपको बता दिया है. First 2 lectures I deal to them only. Now it's your turn. You go through implementing it and then try to verify the output for that mathematical equation, okay, that you have already got in my last 2 lectures. So इसको हमने run किया, ठीक है. This program is being run. It will take moments because see we are creating the implementing the data. So see
This is the output. So predicted value is 1. So in our case, predicted output means that whether going for play or not is yes, you go for play. So I hope that whatever I discussed today is clear to you. Yes or no? Yes, sir. Okay, I am Yes, downloading the sir. attendance list. But thank you. सर lobby So, में oh, बहुत सारे को अभी बहुत करना सा आ रहा है. Is it clear to इसको मैं अभी क्या करूँ? Allow करूँ या नहीं करूँ? Do I need to admit that or not? Because they are trying to enter the classroom at this 4:30. ठीक है. If you tell me. सर देखिए सर आप কিছুমান ডিসকানেক্ট হৈ পেলাই আকৌ জয়েন কৰিছে ঠিক আছে বাৰু তোমালোকে কৈছা কাৰণে মই এডিট কৰি দিছোঁ. Okay, no problem. So anyway, I hope this lecture is clear to you. Right? yes sir yes sir Okay. So in the next lecture, we'll discuss with some new fact. I am terminating the class with respect that this net-based classifier. Net-based classifier में हमने बहुत कुछ discuss कर लिया है, ठीक है, और हमने इसका एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देख लिया है. बट इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज ट्राई टू इम्प्लीमेंट बाय योरसेल्फ, करके देखना. आई होप अभी तक के आप लोगों ने अकाउंट इंस्टॉल कर लिया, तो एटलीस्ट स्पाइडर में इसे करके देखना. ठीक है, सब लोग ट्राई करोगे? यस और नो? Yes, sir. yes Okay. So this is enough for today. Thank you. thank you sir Thank you, sir. thank you sir